लॉस हो गया, बट इट वाज नॉट अ मेजर लॉस. सो इफ आई रिकैप, अपना व्यू था कल की थोड़ा सा गैप अप होगा एंड देन इट विल बी साइडवेज और अ लिटिल बिट ऑफ बाउंस विल बी एक्सपेक्टेड. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. गैप डाउन हुआ पहली बात तो, एंड देन इट ट्राइड टू ब्रेक इवन, बट वो भी नहीं हो पाया एंड देन इट वाज अ वन वे फॉल एक्चुअली. सो एंड आई हैड गिवन द लेवल्स ऑफ 20 to 100 टू बी अ गुड सपोर्ट. यहाँ पे उसने अराउंड 11:30-12 बजे तक वो हेल्ड किया था. सो आई थॉट कि दिस विल बी होल्ड और ये ऊपर जाएगा. इसके ऊपर 20 to 100 को टच किया था यहाँ पे. इफ यू सी ओवर हियर, आधा पौना घंटा यहाँ पे स्पेंड किया 20 to 100 के पास, और फिर ये थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश किया था. लेकिन 200 तक पहुँचते ही इसने धड़ाम करके नीचे छलांग लगा दी एंड देन इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन इटसेल्फ और नीचे चला गया वो. सो प्रॉफिट, बट नीचे थोड़ा सा लॉस हो गया. So it's okay, part and parcel of trading. Okay. So now, coming to daily charts of Nifty. So if you see, next week जो Nifty का expiry है उसके लिए range I am keeping it as 22,500 and 21,500 on the downside, 22,500 on the upside. दोनों दोनों जगह अराउंड 400 500 के आसपास का ये रखा है. ऊपर थोड़ा ज़्यादा रखा है बिकॉज I am still expecting a green candle amongst all these red. Maybe tomorrow also it is possible. Not sure, but I think अगर इलेक्शन में कुछ और भयंकर नहीं होता, so 21,500 should be safe this week, next week actually. So if you look in the lower time frame पे अगर देखें, immediate support is at around 21,800, will act as a good support, as I had mentioned in the previous videos. 21,800 is a decent support, and then the major support will be at 21,500 for Nifty. And talking about resistance will be at 22,200. Now this will act as a very good resistance, 22,200, क्योंकि यहाँ पे ये इसने कोशिश की थी तोड़ने की बट नहीं तोड़ पाया. एंड पिछले टाइम भी उसने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, और उसके पिछले दिन भी इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था, अराउंड 22,230, 22,220, ऑल दिस लेवल. सो बेसिकली 22,200 का स्ट्राइक should be looked out for the next expiry. This will be the immediate resistance, and the next resistance will be at 22,500. Even though we cannot rule out a one way sharp move up, अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है इलेक्शन के फ्रंट पे, तो a sharp move upwards cannot be ruled out. बट डाउनवर्ड मूव अभी थोड़ा सा कैप लग रहा है मुझे, बट यू नेवर नो, मार्केट्स आर सुप्रीम, anything can happen. So if we look at the option chain, there will be nothing to look in the option chain because आज था expiry, so this is useless actually. So let's go to Bank Nifty now. Bank Nifty, if I go to daily chart. So now coming to Bank Nifty analysis, if we look at the daily का chart, ये देखो यहाँ पे जो pattern अपन ने play out होने का बोला था, it is playing out and it has played out actually. It has not touched the bar, but obviously we'll consider this as it has already played out. And if you see over here, volume bar सब 6 के 6 bars red है, मतलब कोई भी green candle Bank Nifty ने नहीं बनाया है अभी तक. And I think ये थोड़ा सा एक छोटा सा green candle यहाँ पे बनना चाहिए. पता नहीं बड़ा भी बन सकता है, you never know, बट एक छोटा सा तो बनना ही चाहिए बिकॉज इतना रिलेंटलेस सेलिंग होता नहीं है यूजुअली वन वे डाउन साइड में. कहीं नहीं दिखेगा देखो आपको यहाँ पे. सो दिस वाज ऑन अ डेली चार्ट, एंड इफ आई गो डाउन तो भी सेम कहानी है. गैप डाउन खुला, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नहीं सस्टेन कर पाया. नाउ वन थिंग टू नोट हियर, आज एसबीआई और पीएनबी का रिजल्ट भी था, बट उन्होंने भी कुछ ज़्यादा फायरवर्क्स नहीं दिखाए एंड इट वाज अगेन डाउन मोमेंट फ्रॉम their results time. Abhi, now if you see, Nifty is 1.55% down and Bank Nifty is 1.11% down, which goes to show that Nifty is much more bearish than Bank Nifty. If you remember, 2-3 दिन पहले ऐसा नहीं था. 2-3 दिन पहले बैंक निफ्टी ज़्यादा बेरिश था और निफ्टी वॉज रिलेटिवली बुलिश टू बैंक निफ्टी. बट अभी द टेबल्स हैव टर्न्ड एंड बैंक निफ्टी इज बुलिश एंड निफ्टी इज बेरिश. सो विल हैव मे बी दिस वाज एन एक्सपायरी इफेक्ट, क्योंकि आज एक्सपायरी था तो अगर डाउनवर्ड मूव चाहिए था तो शायद बिग प्लेयर्स ने वो किया होगा, आई एम नॉट श्योर.
but it is what it is. So price action is much more bearish for Nifty than Bank Nifty. ठीक है. तो रेंज दैट वी आर गोइंग टू प्ले इज 48,800 एंड 46,400. ऊपर का आई थिंक कल रेंज दिया था 49,200 एंड नीचे के साइड पे था 46,800 या 46,700 दिया था. सो दोनों तरफ से 400 पॉइंट और नीचे भी 400 पॉइंट रोल डाउन किया गया है based on the price action, and I am expecting a little bit green tomorrow or in a day or two. So let's see. ये नीचे का स्ट्राइक सेफ होना चाहिए. इफ यू सी ऑन द डेली चार्ट, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. ठीक है. सो दिस इज अ लेवल टू वॉच आउट फॉर. नाउ लेट्स गो टू द ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन, इफ यू सी, इट इज़ नथिंग बट प्योर बेरिश ऑप्शन चेन. यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉल रेटिंग हुआ है हर एक स्ट्राइक पे, और पुट रेटिंग इफ यू सी इट इज़ एब्सेंट. इट इज़ मच मच लेस देन द कॉल रेटिंग दैट वी आर सीइंग ऑन द ऑप्शन चेन. तो इट इज़ बेरिश एंड द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन इज़ 48,000. एंड अगर यहाँ पे देखें तो 48,000 कहाँ पे है? 48,000, या seems like a good resistance to have. It can act as a it can act as a short term resistance, but we'll have to see कल क्या ओपन होता है, कहाँ जाता है. सो टुमारो फॉर इमीडिएट रेजिस्टेंस के लेवल बताओ तो अराउंड 48,000 का रेजिस्टेंस रहेगा. एंड अगर सपोर्ट देखना है तो जस्ट अ मिनट. सपोर्ट के लिए वी हैव दिस सपोर्ट एट 47,200. ये जो पैटर्न प्ले आउट हो रहा है उसका सपोर्ट है अराउंड 47. सॉरी, व्हाट डिड आई से? इट वाज 47,200. या 47,200 के आसपास इसका सपोर्ट है. ठीक है. So these are the levels, and hope you have a profitable day tomorrow, and see you next week. Thank you.